मैंने क्या हो गया? Good morning, everyone. Am I audible?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is the screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay. So please shut off everybody's mind, okay? Because sometimes there's a lot of disturbance in the class. If you want to say something or ask anything in the class, just unmute and ask at that time, okay? I hope everybody in this class is from English medium. This class is for B section English medium. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So since your teacher Bharti Tiwari ma'am was going to take business law, Yes, she ma'am. is out for training and she's not able to take regular classes. So for some time I'll be taking your classes and then she'll when she comes back she'll continue. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. I also want you all to write your name in the chat box so that I can get the attendance from there. Okay, everybody write your name in the chat box. Okay, so let's begin. So we'll start with the second unit today. Okay, Ma'am, which book we should purchase? I think Varshne is the recommended book, but I'll show you tomorrow. Okay, tomorrow or day after tomorrow, I'll get the book from the library. I was not able to go to the library, so I'll bring the book and I'll show it to you which one is Oh, best. Okay. okay, ma'am. Yeah. Until then, you can go through the PPT and the notes that I'll provide. If notes I'll provide in case you need anything, okay? But the PPT would be sufficient for you to understand, I think. Okay. And I would also recommend that everybody keeps a pen and notebook along with them while attending the class. Okay, so that whatever examples I explain, you can note it down. Okay. All right. So we start with the second unit today. The second unit has all these topics: breach of contract, remedies for breach of contract, indemnity and guarantee contract, special contract, um, bailment, pledge, agency, contingency contracts. Okay, so all these points will be covered. We'll start with the breach of contract. What is breach of contract? Okay, Ma'am, and unit 1? unit 1 would be covered by the notes that Bharti ma'am has covered, provided on Moodle. I Okay, will ma'am. start from unit 2 and I'll cover whatever I can until she comes back and then she'll continue. Okay. Okay, ma'am. Breach of contract. I hope everybody is comfortable with English. Is there anyone who wants me to explain in Hindi as well? Please tell me. Okay. So, what do we understand by breach of contract? Okay. A breach of contract occurs when one of the parties uh, to a contract refuses to perform his or her obligation under the contract. Okay, so contract breach is a situation where when there is a contract or agreement between two people, okay, two parties or two persons, two companies, it can be anything. When
any one of them fails to perform the duties that are mentioned in the contract, that is when it leads to the breach of contract. Okay, we will understand better when we will explain the examples. Okay, a breach of contract may be either partial or total, but the effect of that one of the parties fails to perform his or her part of the obligation. When a breach of contract takes place, then the aggrieved party is discharged from performing his part of the obligation to the contract. Okay, discharge means they do not have to perform their duties of mentioned in the contract. The aggrieved party also has the right to take action against the party not performing his commitment under the contract. Okay, breach of contract is of two types, so that we'll get into later on. There are two types of breach of contract: actual and anticipatory. So first we'll understand what does breach of contract mean. Okay, now let's consider an example that there are two parties, A and B. Okay, if A did a contract with B to supply the goods at the rate of they did a contract to supply goods at 100 rupees per unit. Okay, so what was the contract? That A will supply B how many units? 1000 units at the rate of 100 rupees per unit. Okay, and when after 1 month. Okay, this is the contract that was done between A and B. Okay, now if A, there can be two conditions. Okay, first would be if A refuses to supply the goods. Okay, this is the first condition, that A says that I will not supply the goods or I cannot supply the goods. Okay, this can be the first breach. The second breach would be if B refuses to accept the goods. Okay, so both the parties, we just read out that both the parties can fail to perform their duties. Okay, so if A refuses to supply the goods to B, then B will not have to perform his part of the duties. What would be his part of the duties? To pay this rate of 1000 units. 100 rupees per unit was the rate that was finalized. Okay, now the second breach can be performed by B. Please switch off your mics, whoever is unmute, because I'm getting a lot of disturbance in the background. All right. So if B refuses to accept the goods, then also it will be known as the breach of contract. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now we have seen that breach of contract can be from both the sides. Clear? In this case, both the parties would be relieved. For example, if I and B get into a contract and I refuse to perform my duties, B will not have to perform his, okay, by default. Okay,
So both the parties can create or commit breach of contract. Clear? Now we come to, there are two types of breach of contracts. Okay. What are the two types? Anticipatory breach and actual breach. Okay. So today we will study about the anticipatory breach. What is anticipatory breach? Anticipatory breach occurs in executionary contracts. If before the performance of the contract becomes due, one of the parties decides not to perform the contract. Okay. So here, before the contract due date is the important word. Okay. So before the due date, before the duties have to be performed, in that case, anticipatory breach will occur before the due date has been reached. So let's take this same example to understand what anticipatory breach is. Okay. So what was the example? That A and B did a contract, and A was supposed to supply goods 1000 units at the rate of 100 units, 100 rupees per unit after 1 month. Okay. Let's put on a date here. Okay. So A was supposed to perform this duty, or was supposed to deliver the goods on 30th of November. Okay. And the date of contract is 25th September. Okay. So date of contract means the contract was created on 25th of September, and the end of the contract date would be on 30th of November. The delivery of the product would be on 30th of November. Okay. Is this much clear? Now, there can be two cases. Okay. Or two situations. First of all, on 10th of October. Okay. Now, why have I taken this date? 10th of October is before 30th of November, right? The due date is 30th of November. But what did I do? I have breached the contract on 10th of November. Okay. So what happened? On 10th of November, that is before the due date, he refuses to supply the goods to B. Okay. Is this much clear to everybody? The date, situation, and everything? Yes, ma'am. Okay. So on 10th of November, A said that I will not be able to supply you with the goods. Okay. In this situation, B is left with two options. Okay. So B has two options. The first option is that B can terminate contract immediately. Okay. So this is the first option, that immediately we can say that I want to terminate the contract. In this case, what will happen is uh, B will get compensation. Okay. For example, the current price
of the goods is rupees, say 125 per unit. Okay. So B can claim can claim damages how much? 20, 1000 units were supposed to be supplied at the rate of 25. Okay, the difference between the amount that was supposed to be paid and the current price. Okay, which will be 25,000. Okay, so this is the first option that B can opt for. B can terminate the contract immediately, and whatever the price of the goods are on that particular date, that much the difference between the contract price and the real price on that date can be paid as damages to B. Okay, so B can claim the damages. Understood? Is there any confusion in this point? Can I explain once again, please? Okay. Should I explain in Hindi? Will that be Yes, ma'am. better? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अब देखो, दो पार्टीज हैं, ठीक है। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। ए को बी को 1000 यूनिट सप्लाई करने थे 100 रुपये पर यूनिट की रेट पर, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट 30 नवंबर को करना था, मतलब उन्हें ए को 30 नवंबर को 1000 यूनिट डिलीवर करने थे, ठीक। ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 25 सितंबर को हुआ है, ठीक है। 10 अक्टूबर को ऑल ऑफ अ सडन ए ने क्या किया, बोला कि मैं गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 30 नवंबर आने से पहले ए ने बोला कि मैं बी को गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? अब इस सिचुएशन में बी के पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक। क्या? फर्स्ट ऑप्शन अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि बी इमीडिएटली उसी समय जिस टाइम उसने बोला, मतलब 10 अक्टूबर को बोला ए ने कि मैं गुड्स नहीं दे पाऊंगा, तो बी उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, ठीक है। और उस केस में उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। कॉम्पनसेशन किस रेट पे मिलेगा? जो डिफरेंस है, ए ने 100 रुपए के रेट पर फाइनलाइज किया था कॉन्ट्रैक्ट और आज का रेट है 125 रुपीज, ठीक है। तो डिफरेंस जो हुआ 25 रुपए पर यूनिट, ये ए को देना पड़ेगा बी, ठीक है। तो बी क्लेम कर सकता है कि भाई जो तुमने मेरा नुकसान किया है, अब मुझे 25 रुपए एक्स्ट्रा पे करके और सामान खरीदना पड़ेगा दूसरी जगह से, तो उस नुकसान की भरपाई तुमको करनी पड़ेगी, ठीक। तो 25 रुपए पर यूनिट 1000 यूनिट के लिए उसने क्या किया, उसको कॉम्पनसेशन क्लेम कर लिया। अब समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए, तो फर्स्ट Yes, ऑप्शन ma'am. फर्स्ट ऑप्शन अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं Yes, सेकंड ma'am. ऑप्शन पे, ठीक। कि बी के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है, अब सेकंड ऑप्शन में दो सिचुएशन हो सकती है, दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो केस, सबसे पहले तो सिचुएशन देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन है टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, बी कैन
ओके। इस केस में दो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। ठीक है, केस 1, suppose on 30th November if the price is 140 units, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट चालू रखे, तो कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव मतलब कि 10 अक्टूबर को ए ने बोल तो दिया कि मैं प्रोडक्ट्स आपको इस रेट पे सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक, फिर भी बी ने बोला कि हाँ ठीक है तुम मत करना, बट मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करूंगा। ओके, उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेट आने पर, इफ ऑन 30th November the price of goods is 140 rupees per unit, the damages to be will be how much? 1000 यूनिट्स के लिए 40 रुपीज के हिसाब से, तो 40,000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो गई कि अगर 30 नवंबर तक वो वेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं करता है, और 30 नवंबर आने पर उस गुड्स का प्राइस 140 रुपीज हो जाता है 100 रुपीज की जगह, ठीक है, मार्केट में, तो ए को 40 रुपीज के हिसाब से 1000 यूनिट का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। ओके, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स, जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ करिए। कौन है बेटा, देख के बताइए, बहुत बातें बातें हो रही हैं बीच में। ठीक है, हाँ चलो, सो फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया कि 30 नवंबर को अगर प्राइस बढ़ जाता है गुड्स का, तो ए को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसमें पैसे 1000 यूनिट के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। ठीक है, देन सेकेंड केस पे आते हैं, केस 2। केस 2 पे आते हैं। सपोज on 30th November if price is 80 rupees per unit, in that case no damages will be paid and B will be B should be ready to face both the consequences, your conditions। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि बी को तब तो ठीक है अगर मान लो कि प्राइस बढ़ गया 100 से ऊपर चला गया, तो ए को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर
100 से प्राइस कम हो गया तो फिर बी को उसी प्राइस पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर बात तो 100 रुपए की हुई थी, ठीक है, बट अगर 80 रुपीज प्राइस हो जाता है तब भी बी को 100 रुपए ही देना पड़ेगा। ये 20 रुपए का नुकसान बी को उठाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या रखा, अलाइव रखा, उसने बी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया। तो अगर प्राइस कम हो जाता है तब भी बी को 100 रुपए के हिसाब से ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद इन केस अगर इफ बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, ऐसा भी हो सकता है कि बी बोल दे भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है तो मैं नहीं लूंगा प्रोडक्ट, द goods, then he would have to pay or he would be liable to pay damages to A। ठीक है, तो इस कंडीशन में मान लो कि प्राइस कम हो जाता है और मार्केट में 80 रुपए पे वो चीज अवेलेबल है, पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बी को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा इसलिए उसे 100 पे ही खरीदना पड़ेगा। बट उसे लगे कि नुकसान हो रहा है और वो बोल दे कि मैं 80 पे, मैं 100 रुपए पे नहीं खरीदूंगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बी की तरफ से ब्रीच हो गया। ओके, ऐसी सिचुएशन में बी को ए के लिए डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब डैमेजेस कितने पे करने पड़ेंगे, जो डिफरेंस आया है, मतलब 100 रुपए पे वो खरीदने वाला था पर करंट प्राइस क्या है 80 रुपए, तो डिफरेंस जो आया मतलब 20 रुपीज एड फॉर 1000 यूनिट्स विच मीन्स 20,000 रुपीज। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ओके, सो ये हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच कहलाता है। ठीक है, हमने आज क्या क्या देखा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट में और कोई भी एक पार्टी बोल दे कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक, उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक, फिर हम आए एंटीसिपेटरी ब्रीच पे। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या हुआ कि ड्यू डेट आने से पहले कोई भी एक पार्टी रिफ्यूज कर दे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने कि ए ने बोला कि मैं बी को सप्लाई नहीं कर पाऊंगा कुछ, तो उस केस में बी के पास दो ऑप्शंस बचे। क्या क्या, एक तो कि वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे और जो भी कॉम्पेंसेशन है, मतलब 100 रुपए पे वो उसको प्रोडक्ट मिलने वाला था पर आज क्योंकि प्राइस बढ़ गया, यूजुअली ऐसा ही होता है कि कंपनीज अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्राइस बढ़ने पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है उसी प्रोडक्ट के लिए, तो उतना कॉम्पनसेशन उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो बी टर्मिनेट तो कर देगा बट जो डिफरेंस आएगा उसका पैसा वो ए से ले लेगा, एक जितनी यूनिट्स वो सप्लाई करने वाला था उसके लिए। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि बी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट ना करे और उसको अलाइव रखे। उसमें उस सिचुएशन में दो केसेस हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जितना था उससे करंट प्राइस बढ़ सकता है 30 नवंबर आने पर, या फिर कम हो सकता है। अगर बढ़ जाता है तो बी को पैसे मिल जाएंगे 40 रुपए के हिसाब से।
ये रिश्ता मौत से जुड़ा था, इसीलिए नाम शादी के बाद। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम। बी सेकेंड केस में क्या होगा, अगर प्राइस कम भी हो जाता है तो भी बी को नुकसान पे ही खरीदना पड़ेगा। भाई मार्केट में 80 रुपए पे अवेलेबल है, फिर भी उसको 100 पे ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो नहीं खरीदता है तो जो डिफरेंस होगा उसका पैसा बी को भरना पड़ेगा ए के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब सब लोग ये चीज ध्यान से सुनिए कि मैंने ये प्रेजेंटेशन अपलोड किया हुआ है मूडल पे, ठीक है। आप सब इस प्रेजेंटेशन को खोलकर रीड करेंगे, कहाँ तक? एंटीसिपेटरी ब्रीच तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस तक। अंडरस्टूड? 8 स्लाइड तक एवरीबडी सपोज टू रीड ऑल दी स्लाइड्स, ठीक है। और उसके बाद कल की क्लास में हम एक्चुअल ब्रीच पढ़ेंगे। क्लियर? I mean, notebook Yes, we ma'am. should write. Yeah? We have to register also. चलो ठीक है, थैंक यू बॉस, आज के लिए इतना ही। मैम हाँ Ma'am, मैम इसके नोट्स भी बनाते जाना है। नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। मैम यूनिट 2 से शुरू कर दे नोट्स बनाना। हाँ, यूनिट 2 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब फिर मैम वापस आएंगे तो अब उनसे आप फर्स्ट यूनिट के नोट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू गर्ल्स। और किसी को डाउट होता है अगर किसी भी चीज़ में, तो आप मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो आज आप लोग ये रीड कर लेना जितना आज हमने पढ़ा है, ठीक है। ओके मैम। Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम।